for today's dynamic day, I'm just inviting Mr. Brijesh Maida for the sharing of their experience. So, first of all, I'm just welcoming Mr. Brijesh Maida, behalf of the Parul University Electrical Department, and he Okay, has sir. a dynamic experience in the maintenance engineering area. So, today we are just gaining a little bit knowledge in the area of the maintenance related to the electrical protective devices from the Brijesh Maida sir. So over to you, sir, Brijesh sir, and please you just begin. Okay, sir. First of all, thank you, sir, for inviting me. Okay, welcome, sir. Uh, Now I start with my company, that is the Hitachi ABB and Private Limited. So I am working as a maintenance engineer from past 1.5 year. So I gain some little bit of knowledge about what is the protected devices and why they are uses in this field. Okay. So we are begun with this first slide, that is the introduction. So, first of all, what is the electrical protective devices? So, protective devices is basically the device which can be used to protect electrical equipment or and human being. So, basically, device which can use an electrical power system to detect abnormal and intolerable conditions and initiate appropriate corrective actions is known as the electrical protective devices. Okay, so electrical devices are wisely used in electrical equipments. So this device mostly used for protection and also for use for control circuits. Control circuits are used to operate any equipment according to requirement. To control circuit provide control as well as protection because it uses a protective devices. And next, why use the protective devices? So protect for the protection because safety is the first priority in any workplaces. Electrical protection and also we use it for the control circuit, which is like motor starter from the remote locations. Okay, so now we uh, uh, protected devices list is MCB, MCCB, MPCB, RCCB, contactor, overload relay, and fuses. Okay, can you hear me? Yes, sir, you are audible very well. Okay, okay. Hmm. Sir, I can explain in Hindi so all students can understand what Yes, I'm trying to say. yes, sir. Little But bit Hindi yes, and little little bit bit English. English. Okay, Okay, okay. okay. No problem. So first of all, MCB में होता क्या है कि वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है. वो लो रेटिंग के लिए मीन्स कि लो रेटिंग में यूज होता है. और उसके उसके साथ में हम कंपैरिजन करें तो एमसीसीबी होता है जो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है. तो वो थोड़े हायर रेटिंग के लिए यूज होता है. मीन्स 100 to 200 एम्पियर होता है तो एमसीसीबी हम यूज कर सकते हैं. ओके, सो एमसीबी हम लो रेटिंग के लिए मीन्स 60 एम्पियर हो वहां तक हम एमसीबी यूज करते हैं और उसके ऊपर जाते हैं तो हम एमसीसीबी यूज करते हैं. तो वो दो डिफरेंस है दोनों में. और आगे हम यहाँ पर 4 फिगर देख सकते हैं. उसमें जो फर्स्ट फिगर में वहां पर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देख सकते हैं. वहां पर हम उसका जो कंस्ट्रक्शन इनर कंस्ट्रक्शन है. सो वहां पर हम देख सकते हैं कि ऊपर केबल टर्मिनल है और नीचे भी केबल टर्मिनल है. तो वहां पर हम हमारा जो फेज वायर है वो कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और वहां पर से हम नीचे कॉइल आती है, कॉइल असेंबली है. वहां से जो हमारा मेन करंट है वो पास होता है. जब भी एब नॉर्मल कंडीशन होती है तो वो जो आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म है वो अपना आर्क होता है वो आर्क को वो बंद कर देता है. उसकी वजह से हमारा सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन देता है. वो उसका बेसिक प्रिंसिपल है. ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 टाइप ऑफ फिगर देखते हैं कि एक सिंगल सिंगल पोल है, डबल पोल है और 4 पोल है. तो ये इस प्रकार से अलग अलग टाइप है एमसीबी के. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमसीसीबी है जो हायर रेटिंग के लिए यूज होता है. अभी हम दूसरा टाइप है एक आरसीसीबी.
आरसीसीबी हम मोस्ट ऑफली जो भी अर्थ फॉल होता है या रेसिडुअल करंट होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग प्रिंसिपल, और उसका जो डिफरेंट टाइप्स है। 2 पोल होता है और 4 पोल। आरसीसीबी में सिंगल पोल नहीं होता है, क्योंकि आरसीसीबी क्या होता है कि एक फेज होता है न्यूट्रल, दो की वजह से ही कंस्ट्रक्शन से वो वर्क करता है। फिर उसका इनर कंस्ट्रक्शन है जिसमें वो टोरोडॉयल ट्रांसफार्मर है हमारा, जो ये राउंड रिंग टाइप आप देख सकते हैं, वो टोरोडॉयल ट्रांसफार्मर है। तो इसमें होता क्या है कि जब फेज में से करंट पास होता है और लोड में जाता है और फिर न्यूट्रल में, जो एक पूरा सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है, तो उसमें अपना आईएल, अपना लोड करंट होता है, वो सेम रहता है। पर अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, जैसे कि कोई ह्यूमन बींग और या कुछ अर्थ फॉल्ट होता है, तो करंट आई, हमारा जो आई करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से एबनॉर्मल कंडीशन होती है, उसकी वजह से वहाँ पर हमारा इनबैलेंस होता है करंट, तो उसकी वजह से वो ट्रिप हो जाता है। तो उसके अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। In the case 1, under normal condition, voltage across is 230 volt. That is current is I phase is equal to I line. So I is equal to 0. That is in normal condition. And second case, when the earth fault occur or any human being will touch the object, so voltage across same, voltage remains same, but the current IN is not same. So so leakage current I is flow through the earth wire. So there is a difference between the current. So main coil which sense by the sensitive coil and which trip the supply. तो आरसीसी भी ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे कंपनी में कुछ फॉल्ट हुआ था, तो वहाँ पर एमसीबी लगी हुई थी। तो वी यूज द एमसीबी इन द सर्किट, सो वी गॉट दिस फेस बर्निंग प्रॉब्लम। So we replace this MCB. We replace this MCB in place of the and we use the RCCB. Okay. So we not get this type of problem in future. So this is a phase burning problem you can see here. In this phase burning problem, we got this blue phase burn, and we need to replace this phase wire. And after that we uses this type of RCCB in this circuit. Now contactor, basically contactor is not a protected device, but we can use as a protected device in this circuit because of as a control circuit. So contactor is this type of contactor we are using in our control panel. First, this one is the normal open condition when we are when the coil is not energized. Now, after we give the supply between A1 and A2 coil, when coil is energized and this attract this iron core. So, moving tip and fixed contacts closes, and the supply is coming from this. So you can see that these four contact goes inside, and all the connection is goes like that. Now overload relay. Overload is mostly used with the contactor for the protection of this motor and other equipment for the against the overload. Inside this overload relay, there is a basic construction like a bimetallic strip, and in the normal condition, this bimetallic strip goes like this. Now, when the any overload condition occur, the bimetallic strip bend and the contact will open, so you can get the protection against the overload. There is a three contact you can see here, which goes inside the contactor,
and this is all the terminal. This is T1, T2, and 3 T3 is supply for three-phase supply, and this down is the for the control. Now here is the relay. Relay is the basically protective devices which can be used in any control panel. So you can get the sensing of the abnormal condition. So first of all, see in this figure, when the push button press, the voltage supply is coming between the relay coil. So relay coil energized and the normally open contact, this touches down. You can see here. It attract this rod, so it can movable contact come from one place to another place. So, circuit will complete, and you can see here a lamp will on. So basically you can connect any type of the load in this circuit. In the industry we can see this type of the relay. This is the actual construction. You can see here, we can see the 240-watt AC supply. We can use only AC supplies in this. There is a different type of the relay, single 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 pole, two pole, three pole. So we can use in a multiple way. Now you can see the different type of the fuses: cartridge type fuse, glass tube, wire fuse. Fuse is basically static device. You cannot get the any movable part in this. Fiber tube, ribbon type tube, copper tube, and this is the schematic symbol of the fuse. Plug type with ribbon fuse link, knife blade carbon cartridge type. Basically in industry for the higher rating we are uses this type of knife blade cartridge type, and in the household and the lower rating equipment we uses this ribbon type and glass tube type fuse link. Uh, Sir, what uh, can you I explain my other experience in my industry? Yes, yes, yes. Sure, sir. Okay, You okay, can continue. Hmm. okay. Uh, Basically, I am working as a maintenance engineer, so I will to attend all type of the electrical fault. Basically, MCB is the main in the industry. You can get this all type of the equipment controlled by the MCB, not by the normal switch. And the molded gate circuit breaker is used for higher rating in our industry, and the MCB used for the lower rating. Uh, Now in industry, most of the cases we are replacing the old MCB with the RCCB, so we can get the full protection against the any earth fault leakage and the human protection. You can tell the difference by the looking at this RCB and MCB. What is the difference between physical difference between RCCB and MCCB? You can get these four different pole for the MCB, and only you can get the one only single pole for the RCCB. Now you can see there is a test test button for the RCCB. Okay, but you cannot get in the MCB because MCB don't provide this earthfall and human body protection. So RCCB we can get this test button. So test can to check this if the earthfall or earth leakage current will protect against this. So this is the sensing coil you can see here, and this is the test button which I can explain earlier.
ये जब टेस्ट बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होगी जो हमको यहाँ पर चाहिए। तो उससे एबनॉर्मल कंडीशन में हम यहाँ पर उसका जो करंट हमारा अर्थ लीकेज यहाँ पर फ्लो होता है वो यहाँ से फ्लो होगा। तो यहाँ पर उसका सेंसिंग होगा तो उसकी वजह से वो ट्रिप हो जाएगा। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। और एमसीबी में हमको वो नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीबी में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी कोई भी इंडस्ट्री में अभी आगे से जाओ, आपका फ्यूचर प्लान जो भी हो, गोल कोई भी हो कि हमें इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको बेसिकली नॉलेज तो होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमसीबी, आरसीसीबी, एमसीसीबी, so you can get easily watch what you need. So this is the basic this is the basic physical difference between MCB and RCCB. और और हाँ, जैसे कि हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर देख सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर में देर आर टू डिफरेंट पार्ट, वन इज द अपर पार्ट एंड देर इज द लोअर पार्ट। So upper part is the contactor main contactor part, and down below is the coil part. Here, this one, this is the coil part, and this is the contactor upper part. You can see here, gray type, and downward is a coil. So, so if you there are the two different type of the coil. There is a 230 watt, and according to voltage, there is a 230 watt and a 110. There is a 110 volt. So you can change this coil by manually. You need to only dismantle this below part by the unscrewing these two screw. So you get the different type of the contactor according to your requirement. There is a contactor and the overload relay which is used for the motor starting. So आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर मोटर मोटर को स्टार्ट करने के लिए ड्यूअल स्टार्टर, स्टार्टर वो सब यूज होते हैं। तो इंडस्ट्री में ऐसे ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर और ओवरलोड रिले को यूज करते हैं। और दूसरे दो तीन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर यहाँ पर जो थोड़ा स्लॉट्स है वहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। एनओ एनसी होते हैं जो नॉर्मली, एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन एंड एनसी मीन्स नॉर्मली क्लोज। सो वह यहाँ पर हम कनेक्ट करके हम हमारा कंट्रोल सर्किट बना सकते हैं यहाँ पर ओवरलोड रिले से। सो बेसिकली वो ओवरलोड रिले हम मोटर को कॉन्ट्रैक्टर, ओवरलोड रिले, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, वो सब हम यूज़ करके हम मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिले का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जो यहाँ पर एक वाइंडिंग मशीन है उसमें पैनल में हम वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिले यूज़ करते हैं। मतलब वाइंडिंग मशीन होता है उसमें जैक होता है, उसको अप डाउन करने के लिए हमें कंट्रोल सर्किट बनाना पड़ता है। दैट इज द फॉर द मूवमेंट ऑफ द अप जैक। जैक अप करने के लिए हमें डिफरेंट कंट्रोल होना चाहिए, डाउन करने के लिए डिफरेंट होना चाहिए। सो देर आर द फोर टाइप ऑफ द relay we use is for the down two and the for the up two. So basically for the up we uses the two relay and the down for we uses the two relay. Okay, and this is the fuses I explained earlier. So thank you, sir. This is all my. I can explain all this. Hello. Yes, sir. हाँ, It's all इतना from your side. हेलो। Yes, sir. हाँ सर, इतना एक्सप्लेन अभी किया है, दूसरा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? Yes, sir. We found हाँ। means we received some of the questions, sir, actually, यस, ओके। from the student side personally. हम्म। So हम्म। one student asking a question related to that, हम्म। how we can, is that any specific thing is needed to decide the current rating for the MCB? यस यस यस। So करंट how रेटिंग, it can be हाँ। decided actually? Yes. फॉर व्हाट सर, एमसीबी, एमसीसीबी और आरसीसीबी, व्हाट, which MCB, device? MCB, sir. MCB. MCB. Yes, Hmm. MCB, actually MCB is used for only lower rating, that is the 60 ampere.
or Okay. upper, you need to go for the MCCB. That is the molded gate circuit breaker. You can't use the MCB for the higher rating. Hmm. So you get MCB will burn easily. Okay, sir. So Okay. actually, And, with mm, continuation of that question, I just mm, want to know actually, sir. mm, mm, Suppose we are going for single phase and mm, there is a different single phase loading are available. mm, So suppose it is submersible pump of single phase mm, and one of are the fan, we can say. So mm. what exactly extent we have to take for the selection of MCB for fan and for, MCB selection for submersible pump of 1 HP, suppose. 1 HP motor. Yes, sir. Okay. First of all, you need to convert this HP into kilowatt, and according to that kilowatt, you can convert this easily. Can get the current rating of the motor. Okay, fine. Okay. According So, to that, okay, sir, mhm. wait. Yes, yes, sir. According to that current rating, you can get easily what this current required for the MCB. So you can easily choose which type of MCB you need to connect in this circuit. Okay, sir. So ultimately, if we means go for the higher rating, suppose as Mm, per the calculation, mm, we have to required suppose 5 to 6 ampere MCB is required, suppose. mhm, And from the market, if we didn't find out 5 to 6 ampere MCB, mm, availability of the MCB may be 10 ampere. So can we mhm. go for the 10 ampere for the same loading condition? Yes, yes, easily. You can go for the 16 ampere if you don't get this 6 ampere MCB. But Okay. you can't go for the over current rating. But you can easily go to 5 to 10. You can tolerance. You can get only 5 to 10 ampere tolerance on this Okay, MCB. fine. 5 to 10% or 5 to 10 ampere. Ampere means that Okay. you if you want the six if you require 6 ampere MCB, but you can't get the 6 ampere MCB, so you can use the 16 ampere MCB, but you can't go for the 60 ampere MCB. Okay, sir. Good. Okay. Sir, we received the another question. The Mm-hmm. question is, what is the difference between MCB and ELCB, sir? MCB and ELCB. ELCB, yes, sir. ELCB, yes. ELCB is basically earth leakage circuit breaker. That is RCCB is a modern version of the ELCB, but Okay. basically it's a equal RCCB and ELCB is equal. Okay. So, what is the question? MCB, MCB or MCCB? Means the difference between MCB and Uh, ELCB. ओके स्लाइड में आप देख सकते हैं एमसीबी ने फर्स्ट मैंने समझा ये एमसीबी है ओके एंड Okay. दैट इज आरसीसीबी सो बेसिकली फिजिकल डिफरेंस इज दिस देयर इज अ फोर पोल और आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एमसीबी कौन है और ईएलसीबी और आरसीसीबी कौन है और अंदर Okay. इंटरनली फंक्शन की बात करते तो वो भी मैंने समझाया था कि जो एमसीबी है वो जो अपना हायर रेटिंग करंट होता है ओवरलोड करंट उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है और वो ये ईएलसीबी और आरसीसीबी अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है Okay, sir. I think student is satisfied with that answer. ओके Good. Sir, one another good question we हाँ received from the one of the student. हम्म That question is, if that lightning storm are there, हम्म and that particular lightning storm are on means it affects to the residential electrical system, then which हम्म one are going to first of all trip? ELCB is going to trip or MCB is going to trip? एमसीबी What? बेसिकली देखो हम हमारा Hmm. एमसीबी और आरसीबी हम कंट्रोल पैनल और सर्किट में हम यूज करते हैं ठीक है और जो Okay, बोल sir. रहे हैं कि लाइटनिंग होता है तो उसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर होता है तो Okay, वो sir. डिफरेंट अपना डिफरेंट एस्पेक्ट्स है वो डिफरेंट सेक्शन होता है उसका अलग Okay, sir. हाँ But generally in residence, we are not using any lightning area, sir. Actually, we using ELCB हम्म and we are using MCB as per my हम्म understanding. So हम्म the student question is related to that. If हम्म lightning storm is coming to the residential area and हम्म that is affected to that area, then which one are first of all is going to trip or maybe damage?
That is, ELCB देखो, is going to damage or MCB is going to damage? That is the question. okay, okay, I get. Okay. So basically, when the lightning strikes, so first of all, Hmm. ELCB trip, but we can Okay. lightning जब गिरता है ना, तो वो उतना मिली सेकंड में होता है ना कि वो सब डैमेज ही कर देगा, उसको Okay. उसको ट्रिप देने का टाइम भी नहीं देगा. Okay. Fine. हम So that. ऐसा हमारा जो Mhm. हम ऐसे सोचते हैं कि वो ट्रिप हो Mhm. जाएगा, पर बेसिकली वो Mhm. ऐसा नहीं होता, तो उसना इतना माइनर माइक्रो सेकंड में होता है ना कि वो पूरा डैमेज ही कर देगा उसको. Okay, sir. हाँ. Okay, fine. So we received the many more question over हम्म. here. We can just mailing that question to you, sir, हम्म. and हम्म. hopefully you just providing an answer of that all question, because हम्म. there is a actually train of the question is coming in ओके, personally. ओके. Uh, can you share your any other experience related to the industry wherever you are facing related to your work or your experience with the student? हाँ, हाँ, ओके. So basically, all student can go to the industry for this future, Hmm. because Hmm. in the maintenance section there is a most so scope in this field, and you can learn all these things. I जो मैंने भी आपको समझा है वो आप सब सीख सकते हो वहां पर जाके. Okay. और ये बेसिक सी चीज है जो आपको स्टडी में आपको नहीं सीखने को मिलेगी. वो आपको बेसिक ऊपर ऊपर से ही समझाएंगे कि एमसीबी क्या होता है, आरसीसीबी क्या होता है. ये आपको फंक्शनिंग ऐसे आपको नहीं दिखाया होगा कभी भी कि हाउ दिस आरसीसीबी वर्क. तो मेरे ख्याल से तो मैंने पढ़ा है तभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था. अभी आई थिंक कोर्स कुछ चेंज हो गया था, तो पता नहीं है. So, thank you so much to sharing your experience with us, sir. ओके. And hopefully that experience is very helpful to the student in the area of the maintenance of the ओके. protecting devices for ओके. our Parul University student as well as other who are the interested for that. So ओके. again, from the Parul University, behalf of the Parul University and electrical department, I'm just thanking to you for your sharing of your knowledge. थैंक Thank यू you so सर, much. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, पारुल यूनिवर्सिटी.